लो boys and girls, you had a good test I believe. मैंने आसान डाला था, असाइनमेंट में थोड़ा सा था, तो असाइनमेंट और टेस्ट अगर अदल बदल हो जाते तो भी फर्क पड़ जाता. Anyway, it was a good confidence building measure for you, and you know a little bit of electrostatics. This means बाकी I have so many tests lying which can be given to you. अभी भी एक आधा दे सकता हूँ वैसे. Complete electrostatics का अभी देखते हैं कब लेते हैं. And before that, we will start with electric current. It is a very interesting and simpler topic. These are your doubts listed on the board, and I will explain to them. मैंने पहले ही सॉल्व करके रखे हैं. In this question number 2, actually ना वो सवाल आसान है. सिर्फ ये लगता है कि वो 6C है कि 6 कूलम. मैं तो खुद 6 कूलम रीड कर गया. तो 6C or 3C are the capacities and 3Q or the 6Q are the charges. When the key is pressed, it will acquire a common potential, and the common potential is the ratio of the total charge, which is 9Q, to the total capacity, which is 9C. The answer will be 1Q by C. ऐसे लिख लो, right? वैसे 1 volt है पर Q by C लिखो. The charge on A is QA, which is the capacity of A into the common potential. The capacity of A is 6C, and the potential is 1Q by C. C और C कट जाएगा, रह जाएगा 6Q, and QB आ जाएगा 3Q. बड़ा इंटरेस्टिंग है वैसे. A पे पहले चार्ज था 3Q, B पे था 6Q. एक्चुअली चार्जेस जो है वो इंटरचेंज हो जाएंगे. सवाल आसान है, इंटरेस्टिंग. In the next question, you had a capacitor of 1 microfarad which was charged to 30 volts. चार्ज हो गया और दूसरा कैपेसिटर अनचार्ज था. कनेक्ट कर दिया आपने, तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दिया मैंने. डेल्टा यू इज C1 C2 over 2 into C1 plus C2 into V1 minus V2 का होल स्क्वायर. आंसर आ जाएगा. अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद तो भी कोई बात नहीं है. पहला कैपेसिटर आपने चार्ज कर लिया. फाइंड द एनर्जी, हाफ C1 into V1 का स्क्वायर. जो दूसरा कैपेसिटर है, देन यू विल फाइंड द कॉमन पोटेंशियल. Once you find the common potential, then the final energy will be half into C1 plus C2 into common potential V का square, right? And the difference of the energies will give you this result. वैसे result याद हो तो जल्दी हो जाएगा. In question number 8, this was also a doubt for a few students. Remember, the capacity of a spherical conductor is numerically equal to the radius. यार lecture चल रहा होना चाहिए, मेरे को डर बहुत लगता है. Okay, is numerically equal to the radius. He says you have 8 such spheres. Each sphere has a capacity R. They coalesce to form a bigger sphere. 8 into 4 pi by 3 R cube is equal to 4 pi by 3 into bada R cube. And the radius of the new sphere will be 2R. And thus the capacity is 2C. 14th question. He says find the equivalent capacitance. अब तो इस तरह का सर्किट आपको पता लग जाना चाहिए कि वो पैरेलल में यहाँ बनाता है, यहाँ नहीं बनाता है, वहीं पे ऐसे बनाता है. कभी उसका ट्रायंगल बना देगा, राइट? तो these two capacitors are in parallel, giving me C12 as 4 microfarad. 4 microfarad है between this point and this point. So 4 and 12 are now in series, which will give me 3 microfarad, and that 3 microfarad is in parallel with 2 microfarad, giving me 5 microfarads. 19th question. Actually जवाब गलत दिया हुआ है, वहाँ पे 18 वोल्ट की चॉइस ही नहीं है. फिर भी I'll work it out for you. In this question, we have a 30 volt potential difference across P and Q, and you have to find the potential difference across R and S. और P और Q में across अगर 30 वोल्ट है, तो C2, C3 और C4 के across some 30. 3 में तो डिवाइड हो नहीं सकता. मैंने पता क्या किया, those two capacitors C2 and C4, 3 और 3 को कंबाइन करके एक बना लिया. ठीक है, that is 1.5 volts. 3 and 3 in series is 1.5 volts. So 30 volts will be divided in inverse ratio between 1 microfarad जो कि पूछा है and between 1.5 microfarad. 1.5 microfarad is the combination of C2 and C4. ठीक है, and the potential difference will be 18 volts. इसका ठीक है, वो ठीक है. Then in this question
you had a 4.5 microfarad capacitor 3 and 6. The 6 and 3 are in parallel, giving me 9. Actually होता पता क्या है, 6 और 3 बंदा 2 लिख देते हैं, तो गलती होती है, सिली मिस्टेक है। तो 6 और 3 आ गया 9। मैंने क्या कर लिया, तो सिंप्लीफाई कैलकुलेशन 4.5 में ये 9 है, इसको C लिख लिया, इसको 2C लिख लिया। एंड 12 वोल्ट हैज टू बी डिवाइडेड इन इनवर्स रेशियो। 12 इसके क्रॉस निकालना इनटू 2C अपॉन 3C, 8 वोल्ट आ गया। एक्चुअल वैल्यू से करना है, ओके, ये 4.5 का है, ये 9 का है, इसके क्रॉस निकालना है 12 into 9 upon the sum 13.5. That will again give you 8 volts. These were a few doubts which students had asked me. Apart from this, if still you have a doubt, we can work it out on a piece of paper and give it to you. You can put it on the group. Most of the students have done it. Please help each other. Right? अभी थोड़ा सा ना टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का बड़ा है, पर अब मैं बोर हो चुका हूँ। वैसे मैं हमेशा ही बाद में कराता हूँ, विच इज़ द वेंडी ग्राफ जनरेटर। उससे पहले करना कोरोना डिस्चार्ज, लाइटनिंग कंडक्टर, थ्योरेटिकल से टॉपिक है, अभी नहीं करूँगा। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद इलेक्ट्रिक करंट। लेट्स सी द टॉपिक ऑन इलेक्ट्रिक करंट इज सिंपलर। सिंपलर का मतलब ये नहीं है कि वो पढ़ना नहीं पड़ेगा, पर इतना टीडियस नहीं है समझना। काफी कुछ तो जूनियर क्लास का है, और सर्किट्स, the circuits that we have introduced will now be the same as we have learned to identify the series and parallel combination. We have learned to identify the series and parallel combination. Therefore, it will appear to be simpler. Practice makes perfect. Right? Electric current. Now we know that charge flows from a high potential to a low potential, that is positive charge, and negative charge flows from a lower potential to a higher potential. कब तक? जब तक पोटेंशियल बराबर ना हो जाए। And that is what we did in electrostatics, कि जी पोटेंशियल बराबर हो गया, स्टेडी स्टेट बोलते थे, जिस दौरान चार्ज हो रहा था, हमने वो बात देखी। बट इन अ कंडक्टर, द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर विल कीप ऑन फ्लोइंग इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज मेंटेन्ड। तो इलेक्ट्रिक करंट जो है, इट इज कॉल्ड रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, I is dq by dt. Charge is I into dt. Thus, integral of dq is equal to integral of I into dt. Q is equal to integral of I dt. If I is constant, then I can write Q as I into t. So charge is I into t if and only if the current is constant. An electric current is the rate of flow of charge. Charge flows from, just a second. A conductor has a free electrons. Let's say this is a conductor A, B. It has free electrons. फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने का ये मतलब नहीं है कंडक्टर चार्ज्ड है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने का ये मतलब नहीं है कि कंडक्टर चार्ज्ड है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, उतने उसके एटम्स के न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स भी हैं। दे आर जस्ट दैट द इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री। एवरी एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। Even a conductor is electrically neutral. It has free electrons. The electrons can move about throughout the material. They will move only under the influence of a potential difference. So, if this is at a positive potential and this is at a negative potential,
The moment this potential difference is established, the free electrons in the conductor will move from a lower potential to a higher potential. The free electrons in the conductor move from a lower potential to a higher potential. In electrostatics, what we did was that charge begins to flow, और कब तक फ्लो करते हैं? जब तक पोटेंशियल बराबर ना हो जाए. पर यहाँ ना पोटेंशियल डिफरेंस हमने मेंटेन किया हुआ है. बस वो कोशिश करता रहेगा बराबर हो जाए, पर कभी होगा नहीं. राइट? वो है पोटेंशियल. If the potential difference is maintained, these electrons will continue to move from B to A. And the rate at which they flow and the rate of flow is called इलेक्ट्रिक करंट. अब ये मेंटेन कैसे होता है? अच्छा, एक और बात. बाय कन्वेंशन the direction of electric current is given by the direction of flow of positive charge. देखो, इसका मतलब करंट इधर है. What we have is conventional current. This means if we have a conductor, let's say, if we have a conductor, right? And this is at a higher potential, this is at a lower potential. The electrons in the conductor will move in this direction, right? But the electric current is set to flow in this direction. The direction of flow of electrons is called electronic current, but the current that we know as it is actually conventional current. So this is the direction of conventional current, this is the direction of electronic current. And this is the direction of conventional current. बड़ी आसान सी चीज है, एक बारी रीडी मारना बस. Now, what is it that maintains the potential difference across the ends of a conductor? It is called a cell. An arrangement, a device बोल सकते हो, a device that maintains the potential difference across the ends of a conductor. मेंटेन करके रखता है. कैसे? अंदर उसके केमिकल एनर्जी होती है. Ultimately, when the contents of the cell are used up,
then the current will stop flowing because potential बराबर हो गया तो बात खत्म हो जाएगी. So a device that maintains the potential difference across the ends of a conductor. घड़ी में सेल डालते हो, maintain. Actually, this is the chemical energy of the cell which is being converted to electrical energy. Actually, it is the chemical energy of the cell which is converted to electrical energy. The chemical energy of the cell gets converted to electrical energy. 9th क्लास शुरू कर लेते हैं फटाफट थोड़ी थोड़ी. ओम्स लॉ क्या होता है? राइट कि पहले रेजिस्टेंस पढ़ी. चलो पहले रेजिस्टेंस पढ़ते हैं. ठीक है. Resistance of a conductor. So, जो current है ना, the current flows through the conductor and also flows through the electrolyte of the cell. Dilute sulfuric acid होता है. There the charge carriers are ions. So electric current is not only due to flow of electrons, it is due to flow of charges. If it could also be possible that the current is due to both kinds of charges, positive charges as well as negative charges. So the direction of flow of both charges move in opposite directions, but the current will be in the flow in the same direction. Think, if positive charge is moving like this, it means the current is also flowing like this. The electrons are flowing like this, and the negative charges are moving like this. The direction of convection current is given by the direction of flow of positive charge. Whether positive charges are moving or negative charges are moving. It means if positive charges are moving, then conventional current की direction वही है जो उन charges की movement की है. If negative charges are moving under the influence of a potential difference, तो जो negative charges के flow की direction है ना, current की direction उससे opposite है. So if positive charges and negative charges, this happens in an electrolyte, are moving in opposite directions, the current due to them is in the same direction. Anyways, resistance of a conductor. By this we mean the opposition to the flow of current. The opposition to the flow of current. Right? The resistance would be directly proportional to L, the length of the conductor. It would be inversely proportional to the area of cross section. A is the area of cross section. Thus combining them, we get R is proportional to L over A, or R is equal to rho L by A, where rho is called resistivity of the conductor. The resistivity of the conductor would determine इसकी आगे बात करते हैं. So the resistance of the conductor depends upon the nature of material and geometric factors. Okay. Depends upon nature of material and geometric factors. Is the capacitance thing? Capacity of a conductor depends upon geometric factors and the medium inside. Here, the resistance of the conductor depends upon the nature of material of which the conductor is made and depends on geometric factors, that is its length and cross-sectional area. Now, the resistance of the conductor has units इसके अभी लेके आते हैं ओम्स लॉ से आएंगे units इसके. ठीक है.
and then we will take up resistivity again. Ohm's law. Physical conditions such as temperature and pressure remaining the same. Physical conditions such as temperature and pressure remaining the same. The current through a conductor is directly proportional to the potential difference applied across its ends. Think current is the rate of flow of charge. Charge flows under the influence of a potential difference. If the potential difference is more, the rate of flow of charge will be more. लिख लो यार, मेरे बोलने से लिख लो, क्या लिखूंगा मैं वहां पे? Physical conditions such as temperature and pressure remaining the same, comma, the current passing through the conductor is directly proportional to the potential difference applied across its ends. So I is proportional to V. Proportionality here, or we can say V proportional to I, or V equal to I into R, where R is equal to V over I gives the resistance of the conductor. C was Q by V. ना C Q पे डिपेंड करता है, ना V पे करता है. Similarly, the resistance is given by V by I, but the resistance of a conductor does not depend upon V or I. The resistance depends upon geometric factors and nature of material. Right? So R is V over I. Units इसके जरूर आ जाएंगे यहाँ से. Units जरूर आ जाएंगे इसके यहाँ पे. This is volt over ampere. Volt over ampere. This is called 1 ohm. 1 ohm. Right? Now, you can find its dimensional formula also. निकाले volt of the work over charge. You know, R का dimensional formula आएगा work over charge into current. Work is ml2t minus 2. Charge is IT and this is 2. And this will be ml2t minus 3 I minus 2. This is R. Right? Let's talk about resistivity now. Once again. Resistivity from R is equal to rho L by A. Rho is equal to R A by L. Right? Thus it will have units of ohm meter. Right? If A is equal to 1 meter square and L is 1 meter, then rho is equal to R. Resistivity. It is the resistance of a unit length of a wire having a unit cross section area. Unit length of a wire having a unit cross sectional area. ऐसे मत बोलो. देखो, मेरे पास सपोज करो 12 मीटर लंबी वायर है और क्रॉस सेक्शनल एरिया है
5 square centimeters. 5 square centimeters. The resistance of the conductor will depend upon its actual length and actual cross-sectional area. Resistivity नहीं. अगर 12 मीटर की लेंथ है, इसका मतलब वो पूछ रहा है अगर इसे मटेरियल की if I had a 1 meter long length of this wire and having a cross-sectional area of 1 square meters, then that resistance is the resistivity. Thus, the resistivity of any material is fixed because it is the resistance of a unit length of a wire having a unit cross-sectional area. If the now students would over here say, देखो आप समझ आएंगे आपको, अगर मैं लेंथ डबल कर दूं तो रेजिस्टिविटी को क्या होगा? कुछ नहीं होगा, क्योंकि लेंथ डबल करने से रेजिस्टेंस डबल हो जाएगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डबल कर दूं तो रेजिस्टिविटी को क्या होगा? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डबल कर दूं तो रेजिस्टेंस हाफ हो जाएगा। डू यू फॉलो माय पॉइंट? अगर फिर भी उलझो, अनकॉन्शियसली याद तो होता ही है, जितना मर्जी एग्जामिनर उलझाए, यू कैन नॉट चेंज द रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर, इट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ मटेरियल। द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कंडक्टेंस 1/r. The units would be mho. And the reciprocal of resistivity is a conductivity, sigma equal to 1/r. The units of conductivity are sines. वो reciprocal होंगे उसके resistivity के, ohm inverse, meter inverse, right? Conductance and conductivity. Once again, conductivity would depend upon the nature of the material. So resistance, conductance, ohms law. फटाफट चलेगा ये काम, छोटा छोटा काम है। इनिशियली तो कुछ भी नहीं, टेस्ट बनाऊं क्या बने पड़े हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का टेस्ट, फुल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, हिम्मत करनी पड़ेगी, तैयारी करनी पड़ेगी। वही चार्जेस, वही बड़ा कुछ था, शुरू में दे सकते हो, वैसे हिम्मत करो तो सारी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स प्रिपेयर हो जाएगी। हिम्मत करे इंसान तो हो क्या नहीं सकता। संडे को रखे सारी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का टेस्ट, ठीक है? लो आगे बढ़ा, ये बहुत आसान है, टर्म्स ही डिफाइन करनी है, बहुत ही आसान काम। यूजुअली मैं छोड़ देता होता हूँ, इतना सा टाइम मेरे पास आज है। Color coding for carbon resistance. Color coding for a carbon resistance. कोई टीवी खराब हो जाता है, सारे डिवाइसेस खराब हो जाते हैं, there are resistors connected in it, and you take it to a technician, he just observes them, changes it. And international code है, कुछ बैंड्स बने हुए हैं। Let me say ये एक रजिस्टर है, सिलेंडर की तरह होता है रजिस्टर, ठीक है? इसके ऊपर ना बैंड्स बने होते हैं। दिस इज 1 बैंड, दिस इज 2, दिस इज 3, और थोड़ी दूर एक 4th बैंड होता है, ठीक है? बैंड 1, 2, 3 and 4. The color of these bands decides the resistance. The color of these bands are, देखो, black, एक फॉर्मूला है ना, B.B. Roy lives in Great Britain and has a very good wife. मुश्किल काम है। Anyway, the color of these bands are black and this is white, this is white. Black के साथ हमारे पास है यहाँ पे ये brown, this is red, this is orange,
orange, this is yellow, this is green, this is blue, this is violet, this is green. These 10 colors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, denotes the digits 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 9. This is the color of the first 3 bands. This is the color of first 3 bands. Color of first 3 bands. Right? And black digit would mean 0. The brown digit would mean 1, the red would mean 2, the orange would mean 3, the yellow would mean and so on and so on. The fourth digit, the fourth one, take it, fourth band could be gold, golden in color, silver, or it would not be there at all. Gold means that this has a tolerance of plus minus 5%. Whatever the value for resistance is, it would be plus minus 5%. This is plus minus 10%, and this is plus minus 20%. सबसे रहते हैं गोल्ड तो गोल्ड. अच्छा वो दोबारा बताऊँ वो क्या था बीबी रॉय हैं. Okay, okay. This is B.B. Roy, right? B.B. Roy. Great Britain lives in, अपने आप लगा दिया. B.B. Roy lives in Great Britain and has a very good wife, right? Example से करते हैं. कोई भी रंग बोल सकते हो. Like suppose करो पहला बैंड ऑरेंज है, फिर वो येलो है, right? फिर रेड है और फिर गोल्ड. Resistance डिसाइड करना है आपने. Orange means 3. Yellow means 4. Red means, अच्छा, sorry, एक और बात. This is the color of 3 bands, right? The color of 3 bands. The first 2 bands, band 1 and 2. Band 1 and 2. The first 2 digits. The band 1 and 2 represents the first 2 digits, and the band 3rd represents that digit which will be raised to the power of 10. Digit that must be raised to the power of 10. जैसे रेड था 10 to the power 2 into 10 to the power 2. गोल्ड प्लस माइनस 5%. ये आ गया ये रेजिस्टेंस. दोबारा सुनो. टू आइडेंटिफाई द रेजिस्टेंस ठंडे दिमाग से है, कुछ भी नहीं, कोई सवाल थोड़ी है, रटाइए कि अगर हमारे पास एक कार्बन का रेजिस्टर हो, 4 बैंड है उसके ऊपर, 3 बैंड्स पहले और फिर चौथा. The color of the first 3 bands will give us 3 digits, out of which the first 2 digits would represent the first 2 significant figures, the first 2 digits in the register. The color of the 3rd band will give us a digit which will be raised to the power of 10. And the color of the 4th band could be gold, silver or no color, and this would give us the tolerance. कोई और एग्जांपल ले सकते हो, जैसे सपोज करो सारे ग्रीन है, ठीक है, the first, second and third are all green and the 4th is no color. It means 55 into 10 raised to the power 5 plus minus 20%. I hope you've got it. कितना टाइम हो गया लेक्चर का? 34 मिनट्स हुए हैं. बस करें. आगे की बात अब थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है. कंसेप्ट करा सकता हूँ मैं आपको, कोई न्यूमेरिकल करा सकता हूँ,
दैट द रेजिस्टेंस जो है वो डिपेंड्स अपॉन लेंथ, रेजिस्टिविटी एंड क्रॉस सेक्शन एरिया। चलो छोटा सा सवाल है। यूनिट क्लास में भी ये कंसेप्ट आपने किया होगा। कभी तो करना है, आसान बहुत है। सपोज करो मेरे पास एक वायर है, ठीक है, वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर, हमने स्ट्रेच कर दिया उसको, ठीक है, स्ट्रेच टू ट्वाइस इट्स लेंथ। I did not take another wire of length 2L in the same area of cross section. Here is the cross sectional area, remember. अब रेजिस्टेंस कितना होगा तो पहले वॉल्यूम इक्वेट करना पड़ेगा। स्ट्रेच फाइंड न्यू रेजिस्टेंस, तो पहले था जी R is equal to rho L over A. Now A dash into L dash is A into L, वॉल्यूम उतना ही रहेगा, A dash नई लेंथ कितनी है 2L, A L, L और L कट गया, A dash आ गया A by 2, क्रॉस सेक्शन एरिया उसका हाफ हो जाएगा, तो नया रेजिस्टेंस कितना आएगा, R dash is equal to rho, resistivity remains the same, L dash upon A dash, rho L dash is 2L and area of cross section is A by 2, which is 4 rho L upon A. This is R dash, which is 4R. Thus its resistance would become 4R. Concept let's do up. करंट में कंसेप्ट्स बहुत है, तो डायरेक्ट थ्योरी पूछी जाएगी वो थोड़ी आगे जाके आएगी। सो बेसिक्स हमने फटाफट कर देना। R dash is 4R. In general, if the wire is stretched to n times its length, so resistance will become n square R. Length will become n into L and area of cross section will become A upon n and the resistance would be n square R. Achha. Let's say I have एक और concept, ये मेरे पास है cube, right? The length is A, the breadth is B, and the height is C. Now the resistance across PQ the resistance across PQ, the potential difference, the battery applied across P and Q, this entire length A, right, rho L over cross sectional area कितना इतना, which is B to C. Okay, अब सपोज करो कि मैं बैटरी यहां पे लगाता हूं ऊपर नीचे, ठीक है, अक्रॉस लेट मी से S and T, रेजिस्टेंस अक्रॉस S and T, तो बैटरी यहां लगी है, जो लेंथ होगी वो कितनी होगी C, रो इंटू C ओवर क्रॉस सेक्शन एरिया कितना होगा, ये वाला क्रॉस सेक्शन एरिया होगा, ये वाला क्रॉस सेक्शन एरिया विच इज A इंटू B, ऊपर और नीचे, लेंथ ब्रेड, A इंटू B. This is how you can do it. It could also be between these two ends, जो ये इधर वाला और इधर वाला. I hope you are understanding this point. You know, ये this is A, this is B, this is C. अगर मैं बैटरी यहां लगाता हूं तो ये लेंथ है और अवेलेबल क्रॉस सेक्शन एरिया ये रहा, राइट? अगर मैं बैटरी यहां लगाता हूं ये वाले पॉइंट्स में अक्रॉस, ऐसे कर लो, तो ये लेंथ हुई
ठीक है, ये कितनी थी? C, बिल्कुल ठीक है। और ये क्रॉस सेक्शन एरिया हो, ऐसे भी लगा सकता हूं, इस तरह भी लगा सकता हूं, ये मैंने इसी तरह लगाई, इस तरह भी लगा सकता हूं, फिर वो B लेंथ आ जाएगी एंड सो ऑन, राइट? यू कैन फाइंड द रेशियो ऑफ RTQ। एक और अब तो शुरू हो गया। मेरे पास एक क्यूब है, 1 क्यूब, and the length is L, the breadth is L, and the height is also L. He says, how does the resistance depend upon L? R आएगा, रो, लेंथ क्या है? किसी 2 इंच के क्रॉस लगा लो, ये लेंथ हुई पूरा, क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है? क्रॉस सेक्शन एरिया ये L स्क्वायर। तो क्वेश्चन इंटरेस्टिंग बन गया, R आ गया, फिर रो है, राइट? तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द L आ गया, वो न्यूमेरिकल आया, न्यूमेरिकली। सो इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस, सिंपल, ठीक है? So please see that tomorrow we will start with something very, very interesting. This entire unit is divided into 3 parts. The first part is basics of current electricity. The second part is going to be resistors in series and parallel. बड़ा मजा आएगा. And the fourth part is going to be measurement, जैसे कोई potential difference सही measure करना है, potentiometer and meter bridge. That is electrical instruments. So basics, series parallel, फिर electrical instruments and heating effects. So these 4 parts से मानो, चारों छोटे पार्ट्स हैं, and by and large we will finish one part in 3 days. It means 12-14 लेक्चर चाहिए मुझे. Good day.